Okay. So what I want to create one class. I want to create one data type. Okay. I want to create one data type, and in data type, I want to store name type information, age, and phone. Okay. So in name, user will enter the name. Okay. User will enter the age. Okay. Then user will enter the phone number. Okay. So we have to store these information. So what we will do, we will create one data type. Okay. Custom type of data type, and we are using quote means we will create one string variable without quote integer variable, and we have to store again string type information. Okay. So one, we have to store string, then one we have to store integer, then again we have to store string information. Okay. So why simple data type and collection it's not possible. So we will create wrapper class. Okay, I'm going to create one wrapper class. Open the developer console, click on new, go to the class, write any name, class like name is phone. So student name, employee name, customer name, what you want to store. Okay, you can write it. So if you want to store the information for the student, write student. Okay, so student is the data type. Student is the custom data type in which you can store. Okay, write the variable name, which type of information you want to store. You can store one string type information. You can store one integer type information, and you can store one string type of information. Means two string and one integer type of information you can store in this data type. Okay, so student is the data type in which you can store. Okay, now what I want to create one wrapper class, and in which wrapper class I want to store string type of information for product name. I want to store product code. Okay, again product code, it will be in string type. I want to store price of the product price, and I want to store total quantity of the product. Okay, so these information I want to store in one variable. These information I want to store in one variable. So what we will do, again we will create the class. Okay, we will go to the class, we will write the name like product information, whatever name you want to write, you can write it, then save the class. And okay, then whatever the variable you want to create, you can create it inside the class. If you want to store product name, public string product name. Okay, you want to store product code, write it here. If you want to store price, store the price, public decimal product price. Okay, if you want to store quantity, so you can store the quantity also. Okay, so create one class. Inside the class, simple, you have to create the variable. Okay, create the variable only. So in when you will call the product, in product you can store product name or price, these information. Okay, now what I have to do,
I want to create one custom data type, and in custom data type, I want to create invoice date. I want to store invoice date information. I want to store, before I'm creating the invoice, I want to store quantity information. Okay, next I want to store amount. I want to store tax information. I want to store total information after tax. Okay, so I'll create the wrapper class means custom data type. Then inside the custom data type, you can see inside the wrapper class, I'll create some variable or data member. Public class invoice. Okay, data member means create some variable. So to store the date information, public date, invoice date. Okay, quantity, integer type. Public amount means decimal. Currency, for currency use decimal date type. Tax use decimal date type. Next we have total. Again we will get currency. So again I am using decimal. Okay, so like that we will create the wrapper class. ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No No, doubt, sir. sir. Good. Okay, so we have created the wrapper class. Okay, so invoice is the data type. So which type of data type it is? Primitive, non-primitive? कस्टम तो है डेटा टाइप, पर प्रिमिटिव में आएगा, नॉन प्रिमिटिव? Sir, I think non-primitive. अकॉर्डिंग टू मेन नॉन प्रिमिटिव. गुड. ओके, सो जो भी हम रैपर क्लास के थ्रू कस्टम डेटा टाइप क्रिएट करेंगे वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं. ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव मीन्स we will create reference variable. If you want to store the information in wrapper class, so you will create reference variable. ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल कब कैसे क्रिएट करते हैं हम? डेटा टाइप नेम, या डेटा टाइप नेम्स, reference variable name is equal to new data type name. Okay, so let's suppose it's the product class. Again I'm going to create one student class. Student is already taken. Okay, so it's the student class. In student class we can store name is phone. Now what I'm doing, I'm going to default it. Okay, so is class name student std is equal to new student. Okay, so std it's the reference variable name. In reference variable name, with help of reference variable name, we can call the variable of the class. So std dot name. Okay, and in name I'm entering information. So I'm writing one name. Then I'm entering age. Okay, then I'm entering phone number. Now what I'm doing, I'm going to debug system.debug. I want to print, you can say I want to print the name. So we will write reference variable name std dot name to print the name.
And if you want to display complete information, so here you can also write student info st. ठीक है. If I'll print, I'll execute, I'll get complete information in line number 6. Student name Dhyan's information is 10, name Dhyan's phone number. I'm getting. Okay. Now what I'm doing some changes here. Okay. Student is the class. Student is the wrapper class in which we can store name, age, phone. So name I have entered Dhyan's. Now what I'm doing, again I'm going to create one reference variable. Okay. And std, student s1 is the reference variable, is equal to std, means this reference variable. Okay. After that, what I'm doing, I'm going to debug system.debug s1 s1 dot. Okay. So which value I'll get in line number 4? All the values name name you can get. सिर्फ सिर्फ प्रियांश आएगा. सिर्फ free answer. ठीक है. If I'll write again debug, and this time I'm printing std dot name. So what value I'll get in line number 4 and 5? In line number 4, you are saying the answer. And what will be in line number 5? Same as line number 4. लाइन नंबर 4 में नहीं आएगा यार. कितने लोग हैं जो बोल रहे हैं कि लाइन नंबर 4 में रियांस नहीं आएगा? मेरे को लगता नहीं आएगा. सर रियांस ही आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू को इसमें डाल दिए तो भी रियांस आ जाएगा. उसमें पहले से रियांस है. करिए सर, एग्जीक्यूट देखते हैं क्या होता है. Okay, I'm clicking on execute button, click on debug only. We'll get same value s1 रियांस std name रियांस. ठीक है. मिश्रा जी, आया समझ में? तो मेरे std को की लगा इंफॉर्मेशन. मेरे को लगा न्यू मेरे को मेमोरी लगा फिर से क्रिएट करना पड़ेगा. मेरे को ये लगा सर स्टैटिक वाला. ठीक है. ठीक है, अब इसमें कुछ और ट्विस्ट है. ठीक है. So I created one reference variable for the student name, phone, age. Now what I'm doing, I'm going to create second reference variable. Student s1 is equal to std. Okay. Again, what I'm doing, I'm going to create third reference variable. S2 is equal to S1. Okay. Now what I'm doing, S1 dot name. I'm going to change it. Okay. S1 phone. S1 is. Okay. After that, what I'm doing, I'm going to create, I'm going to change the information of STP. So, थोड़ा बड़ा.
ठीक है, नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ S1 name. Sir, in line number 11, this is S3 dot name or S2 dot name? std dot name. No. फर्स्ट वाले का लाइन नंबर सर 13 एस काउंट वन कीजिए। में S1 में गौरांशु, और हाँ, S2 में सर और आएगा ऋषभ। S2 में एक ऋषभ। जस्ट अ मिनट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रीति मैम, S1, S1 गौरांशु। गौरांशु, गौरव, देन रिया, ऋषभ, ऋषभ, यस, ऋषभ, एक गर्व। एंड गर्व। कर्व। यस। ठीक, किसी को कुछ चेंजेस कराने हो टेल मी। सभी दिमाग लगाओ और बताओ व्हाट विल बी दी सर एस वैल्यू। वन डॉट फोन आएगा, जो लाइन नंबर 9 वाला प्रिंट होगा। चलो ठीक है, तो एंड S2 वाला लाइन नंबर 3 वाला प्रिंट होगा। और एसटीडी नेम, नेम है ये फोन, एसटीडी फोन, एसटीडी फोन लाइन नंबर 3 वाला प्रिंट होगा। सेम। 10 5 10, इसमें 15, 10। 10 5 15। नो सर, 15, S2 डॉट एज में 15 आएगा। 10 एंड 15 5। एसटीडी, यस, हाँ एंड हाँ, एसटीडी डॉट एज में 5 आएगा। यस। उल्टा। सब एग्री हैं इस इन आंसर से? यस सर। यस सर। ठीक है, एग्जीक्यूट करूं? करूँगा। लाइन नंबर देख रहे हैं, प्लस नहीं लगाया कहीं। कर्व कर्व कर्व, तो 15 15 15। ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? कैसे हुआ? अब लगाओ लॉजिक जिसको लगाना है। सर अगर कोड का फॉलो सर लाइन बाय सीक्वेंस से लाइन फॉलो चले करो तो तो सर आउटपुट सीक्वेंस से यही तो यही आएगा। होगा ना।
अगर लाइन बाय लाइन कोड को फॉलो करें। हाँ, लाइन बाय लाइन तो। बट सर इसमें दिखा रहा है कि सिर्फ जो अपडेटेड लास्ट वैल्यू है उसी को उसने पूरे में रेफरेंस कर दिया है। अच्छा, हाँ, रेफरेंस। समझ गए सर, मतलब कि उसने क्या किया है, रेफरेंस लास्ट वैल्यू को सबसे रेफरेंस। अपडेट कर दिया है। ठीक है, कॉपी लेके बैठना अगर इस टाइप के सवाल करने हैं। इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, देन वी विल सॉल्व एंड वी विल चेक हाउ वी आर गेटिंग द डेटा, व्हाट विल बी द डेटा। आया नहीं तो। ठीक है, ये ओके, नाउ वी विल। ठीक है, उस दिन मुक्ता ने कुछ सवाल पूछे थे, ठीक है, उस टाइम मैंने मुक्ता से मना कर दिया था पूछने का। ओके, सो नाउ वी विल लर्न व्हाट इज रेफरेंस वेरिएबल, हाउ इट विल वर्क। ठीक है, तो रेफरेंस वेरिएबल स्टूडेंट एसटीडी इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? What we have done, we have created new student means we have created one member. When we will write new student, so what we are doing, we are creating one member, student type of member. What's the name of this memory? STD. Okay. When I say STD means we are calling this one. Okay. In STD, what is in STD? Name, phone, age. Name, phone, age. Okay. So in STD, what value are available? Name, phone, age. Okay. What's the name? Reserve. Phone 1 1, age 5. Okay. Then what I've done, student S1 is equal to STD. So what I'm doing, S1 I am referring, S1 जो है वो किस तरह का वेरिएबल है? रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल मीन्स वी विल रेफर टू द लोकेशन, we will refer it to the location, so we are referring it here. If I'll say S1 dot name, so we are referring here. In S1 there is reserve available. Okay, S1 is available. Then in next line, what I've done, student S2 is equal to S1. Student S2 is equal to S1. So again, I'm referring it on this location. ठीक है, मिश्रा जी, न्यू लिखने की जरूरत है? नो सो, कंफ्यूज थे आप वहां पे? मेरे को लगा कि सर विदाउट न्यू मेमोरी, न्यू कैसे, मतलब कैसे रेफर कर सकते हैं। ठीक है, एक बार क्रिएट मेमोरी एक बार ये होती है, ठीक है, देन वी कैन रेफर, इस तरीके से रेफर करें। अगर मैं स्टूडेंट नेम S1 नेम S2 नेम फाइल से, सो वी आई एम सेइंग इट्स अ रिसर्व, STD name, S1 name, S2 name, reset. Okay. After that, what I have done, I have changed the value of S1 name. S1 name, what is it? It's the Koransu. Phone number change. Okay, then I have changed the data of the, you can say, age also. ठीक है, जैसे ही डेटा चेंज करा STD नेम, इसको दोबारा लिख,
ठीक है, अगेन आई एम गोइंग टू क्रिएट द मेमोरी, मतलब कि ऐसी ही एक मेमोरी है। ठीक है, वी हैव अपडेटेड द इंफॉर्मेशन। नेम फोन इज, सो तो नेम इज ये मेमोरी कोरांसु। में हो रहा है ना, कोई न्यू मेमोरी तो है नहीं है। नहीं, न्यू मेमोरी नहीं है, ओल्ड मेमोरी। मीन्स वी आर चेंजिंग द डेटा। मेमोरी वही है, फील्ड वही है, बट वी आर चेंजिंग द डेटा। एस वन डॉट नेम कोरांसु, नाउ डेटा इज 222, देन एस वन इज 10। ठीक है, ओके, अगेन I am changing the data. So what's happening? Name phone is. सर आप यहाँ पे ये कर रहे हो ना कि तीन वेरिएबल्स हैं वो रेफर कर रहे हैं एक ही मेमोरी को, हाँ जी, तीन और अगर वेरिएबल कोई एक ही भी मेमोरी चेंज को होगी तो रेफर वो कर रहे हैं। सबके लिए होगी। हाँ, तो सर एक टाइम पे तो एक ही वेरिएबल मेमोरी को रेफर कर पाएगा कि तीन वेरिएबल एक साथ ही कर रहे हैं? वो होता है सर प्रिमिटिव डेटा टाइप में। ये लोग क्लोनिंग और रेफरेंसिंग के बीच में डिफरेंस अभी कर नहीं पाए सही से, आई थिंक। ये लोग क्लोनिंग सोच रहे हैं कि यहाँ पे इसका डेटा क्लोन हो रहा है, बट ये रेफर कर रहा है। ये रेफर कर रहा है, मेमोरी सेम है, इस जगह क्लोन उस तो अलग मेमोरी को हो गया रेफर ना, कर रहे क्लोन हैं। तो डुप्लीकेट हो गया। हाँ, डुप्लीकेट थोड़ी ना है। सर आपने इतने सब कुछ लिखे थे सिस्टम डॉट डीबग में, और इसमें ट्विस्टिंग मेथड नहीं होता कहीं? ट्विस्टिंग भी होता है इसमें। Okay. एस वन नेम कर्व, एस टू एज 15, अपेक्स में तो एंड व्हाट्स द फोन नंबर। फोन नंबर क्या है, टू टू पहले टू वाला ही, टू। अपडेट नहीं किया, तो ठीक है। तो जो लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो ही रहेगी। ठीक है, अब चेक करते हैं कि रिजल्ट यही था, कर्व 2 2 2 यही है 15। सर, यही है। यही तो सर, यहाँ तो सर। दिमाग यही में था। बैठ गया, अब तो यही है। अब सभी को समझ में आया ये वाला सिनेरियो, या हाँ सर, कंफ्यूज हो चुके अब हो? समझ आ गया। सर मेरे को बस ये डाउट है कि एक ही मेमोरी को हम्म, एक से ज्यादा वेरिएबल रेफर कर सकते हैं एक ही टाइम पे? हाँ, कर सकते हैं। कोई भी सर वेरिएबल अगर अगर इसकी जगह क्रिएट जैसे कर। रेफरेंस वेरिएबल ना होके वो जो हम्म, दूसरे वाले वेरिएबल होते हैं वो होते, तो जैसे हमने बताया वैसे ही चलता ना फिर तो। हाँ, उसका भी एक एग्जांपल दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। ये वाला समझ में आया ना वैसे? किसी यस को कोई सर। डाउट हो तो पूछ लेना, फिर मैं अच्छा सा असाइनमेंट देने वाला हूँ। नहीं सर, वी आर रेडी। यस। Okay, so I'm not going to create the class. I'll create it later. First, I'm going to write the question. Okay, we have one wrapper class that is customer. Okay, I'm going to create the instance for the class. Okay, so in customer, you can say class. We can store last name, first name, age, city, phone. These information. Okay, so I'm writing the name. Customer C1 is equal to first. Okay, then customer, any name, new customer. Okay, then C1 dot last name and name. C1 dot first name. Okay, then I'm writing the age. I'm writing city,
Okay, I'm writing phone number. Okay, so we have these information. Now what I want to display the last name, first name is system dot customer last name. लेस कर दीजिए सर। Thank you, Mr. Razi. आपने गलती की थी इसको। Cities. Okay, now you have tell me the information of these variables. ठीक है, मुझको आपको कस्टमर की फर्स्ट नेम लास्ट नेम फोन ए सिटी बताना है, एबीसी की एंड C2 की। ठीक है, टेल मी द वैल्यूज ऑफ एबीसी, कस्टमर सिटी एंड C2. और इंफॉर्मेशन मिली है। व्हाट? तो जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन होगी वे वही एबीसी की इंफॉर्मेशन होगी, और जो एबीसी की बिल्कुल होगी वही। एक्यूरेट डेटा चाहिए मुझे, मतलब एक्यूरेट वैल्यू। मैं टाइप करूंगा।